Assalamu alaikum dear students. Today I am going to explain PC Ren's grammar chapter number 9 countable and uncountable noun. So let's continue. Read the sentence given below. I need water. Give me some apples. He is drinking milk. Rita is wearing a new pair of shoes. So the words water, apples, milk and shoes are all common noun. बच्चों यहाँ पे जो रेड कलर से लिखे हुए वर्ड्स हैं लाइक वाटर, एप्पल, मिल्क एंड शूज, ये सारे जो है वो कॉमन नाउन है. नाउ we shall ask ourselves the following questions and write the answer. Can we count the water? Children, क्या हम लोग वाटर को काउंट कर सकते हैं? Answer is no. We can't count the water. If it is in the glass, then only we can say only that glass of water, but we can't count the water. Can we count number of apple? बच्चों हम लोग क्या एप्पल को काउंट कर सकते हैं? Yes, we can count and apples. So पिक्चर के अंदर देखो आप लोग काउंट कर सकते हैं. There are 5 apples, right? So we can count apples. Can we count the milk? No. If it is in the glass or in the bag, so we can say it is a glass of water or like this. But if the milk is spread or only if it is about milk, then we can't count the milk. Can we count the pair of shoes? So yes, we can count the pair of shoes. So now definition of countable noun. So see the definition. We can count the apple and the shoes and hence they are countable noun. The things which we can count, that is called countable noun. जो चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, जैसे एप्पल एंड शूज. Definition of uncountable noun. We cannot count water or milk and hence they are uncountable noun. The things we cannot count, that is called uncountable noun. बच्चों जो चीज़ें हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क. इफ इट इज इन द ग्लास वी कैन से, और इफ इट इज इन द ball we can say ball of milk or ball of water, but we can't count if it is only about water and milk. So water and milk is uncountable noun. So now circle the countable noun and underline the uncountable noun in the following. So बच्चों ये एक्सरसाइज में जो काउंटेबल नाउन है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है. सो फर्स्ट है न्यूज़, वेदर एंड बुक. तो इसमें से जो काउंटेबल नाउन है उसके ऊपर सर्कल करेंगे और जो अनकाउंटेबल है उसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे. सी न्यूज़ इज अनकाउंटेबल, weather is also uncountable now, and book is countable. News we can't count, right? Weather also we can't count, but book हम लोग बुक को काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी बुक है. न्यूज़ हमारे पास कितने हैं, वेदर कितने हम लोग काउंट नहीं कर सकते, बट बुक को हम लोग काउंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है हेट, किक एंड वर्क. सो हेट वो फीलिंग है, उसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते. केक वी कैन काउंट इट. वर्क दैट ऑल्सो वी कैन काउंट. नेक्स्ट इज सैंड, वेजिटेबल एंड वाटर. तो चलो इसमें से हम लोग कौन सी चीज़ ऐसी है जो काउंट कर सकते हैं और जो ऐसी है जो नहीं काउंट कर सकते. सैंड वी कैन काउंट,
vegetable, we can count it. So we have to circle it. And water, we can't count. Next है table, wisdom and ice cube. So table we can count, wisdom we can't count, and ice cubes we can count it. हम लोग ice cube and table को count कर सकते हैं, wisdom को नहीं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेड एंड जाइलोफोन. तो इसमें से हम लोग कौन सी चीज़ ऐसी है जो काउंट कर सकते हैं और जो ऐसी है अनकाउंटेबल है. इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अबाउट होल इलेक्ट्रिसिटी, so we can't count whole electricity. Bread we can count it, and xylophone also we can count it. Next is desk, dish and salt. Desk we can count it, dish also we can count it, but salt we can't count the salt. Next is crown, happiness and rice. So crown we can count it, happiness we can't count it, and rice also we can't count it. If it is in the bag, then only we can say it's a bag of rice or 2 kilo or 3 kilo, but it's about whole rice, so we can't count the rice. So measuring noun, there are certain phrases that we use to measure countable and uncountable noun. You have already read about one such phrases like pair of shoes. यहाँ पे कितने phrases ऐसी हैं जो countable हैं और कितने ऐसे हैं जो uncountable हैं. तो ऐसे phrases हमने देखे. Just example, pair of shoes, right? These phrases can be used for both countable and uncountable noun. कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग countable में भी ले सकते हैं और uncountable में भी ले सकते हैं. So now exercise 2. Look at the given picture, then fill in the blanks with countable and uncountable noun. यहाँ पे हमें पिक्चर देखना है और फिलअप्स करना है with countable noun and uncountable noun, right? So first one is a dozen of dash, means dozen of bananas. Next is a glass of dash, so a glass of water. A glass of water we can count it, but only water we can't count it. A pound of meat. Next is a grain of dash, so a grain of rice. Next is a pair of dash, so a pair of socks. A score of apples, right? Next is a mile of road. Next is a forest of trees. A carton of milk. यहाँ पे कितनी चीज़ ऐसी हैं जो हम लोग काउंट कर सकते हैं और कितनी चीज़ें ऐसी हैं वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते. सो जिसे हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं और जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसे अनकाउंटेबल कहते हैं. So next is a can of dash, so a can of soda. A bag of dash, a bag of money. अगर वो मनी बैग बराबर है तो we can count it, but only it's about money, so we can't count it, right? Next is a bar of chocolate. Next is a roll of paper. Next is a piece of music. Next is a stick of butter. Thank you, students.